Hello students. So today I am going to discuss the next chapter of organic chemistry, that is alcohols and phenols. ठीक है? So first, the functional group of alcohol is OH. So there are two lone pairs of electrons on oxygen atom because the atomic number of oxygen is 8. It contains 6 electrons in its outermost shell, in which 2 electrons are used in bond formation and rest 4 electrons are present in the form of lone pairs. So 2 lone pairs are there. So this is an alkane. Alkane hydrogen remove कर दो और OH add कर दो, that will form alcohol. This is benzene, right? Benzene hydrogen remove कर दो, hydroxy group add कर दो, that will form phenol. Right. So next is classification of alcohols and phenols. So first आएगा aliphatic alcohols. Aliphatic alcohols क्या होते हैं? जिन्हें straight chain compounds हो और branch chain compounds. Straight chain और branch chain compounds are called aliphatic compounds. So CH3OH एक कार्बन का meth. So in common name ऐसे use करांगे थे. So this is methyl alcohol. अच्छा 2 कार्बन आ गए. This is ethyl alcohol. So this is secondary carbon. This carbon में 2 कार्बन लगे, that is secondary carbon. उन्होंने बच गया, that is isopropyl alcohol. And in this case, S carbon में 3 कार्बन लगे. So this is tertiary. So total carbon कितने होंगे? 1 2 3 4. Tertiary butyl OH में बनेगा alcohol. So this is methyl isopropyl and tertiary butyl. Isopropyl alcohol short form IPR OH will isopropyl. This is tertiary butyl alcohol. ठीक है? This is tertiary butyl alcohol. This is methyl alcohol. MEOH लिख देंगे. Ethyl alcohol is written as ETOH. These are the different notations, short notations of writing. This is isobutyl, tertiary butyl, or ethyl butyl, right? Next is aromatic alcohols. Aromatic alcohols के लिए आगे. This is aromatic alcohol. This is isobutyl. This is phenyl methanol. ये कार्बन है phenyl methanol. In common name it is also called benzyl alcohol. This is phenyl. ये कार्बन नाम है single bond AN2. It's phenyl methanol. और ऐसा ना फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना. जेड़ा कार्बन फंक्शनल ग्रुप में लगा उन नंबर छोटा देना. 1 2. This is 2 phenyl. This is phenyl. 2 तो लगा. This is 2 phenyl ethanol. And then I this compound NaCl 1 2 3. It's 2 phenyl. तीन कार्बन का क्या देखो? prop secondary तो OH लगा है. So 2 phenyl propane 2-ol. 2 phenyl propane 2-ol. ठीक है? क्योंकि तीन कार्बन का prop बन गया, सिंगल बॉन्ड का AN और क्या आएगा? OL. OH का OL आएगा. क्योंकि O is a vowel, फंक्शन का नाम vowel तो शुरू होता है, इस करके ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ E ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, right? Now next is classification of alcohols, that is primary alcohol. जिस कार्बन ਦੇ ਨਾਲ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है डायरेक्टली, ਉਹਨੂੰ डायरेक्टली ਇੱਕੋ कार्बन लगा है. जिस कार्बन ਨਾਲ OH ग्रुप लगा है, ਉਹਨੂੰ डायरेक्टली ਇੱਕੋ कार्बन लगा है. This is primary alcohol, that is ethyl alcohol. Next आएगा secondary alcohol. जिस कार्बन में OH ग्रुप बनाया जाए वो डायरेक्टली 2 कार्बन लगेंगे, तो दैट इज सेकेंडरी alcohol. आइसोप्रोपाइल alcohol, कॉमन है आइसोप्रोपाइल यूज करते हैं क्योंकि सेकेंडरी कार्बन में कोई ग्रुप लगा है उसको यूज करते हैं आइसो. 3 कार्बन का प्रोपाइल alcohol. और नेक्स्ट इज टर्शियल alcohol. टर्शियल alcohol केड़ा है? जिस कार्बन में OH ग्रुप लगा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन लगेंगे, 1 2 3, तो दिस इज टर्शियल alcohol. तो नाम आएगा टर्शियरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल alcohol. दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल alcohol. Right? Next is carbonyl system of naming. So beta CH3OH group is known as carbinol. CH3OH group is known as carbinol. Right? So this is carbinol and then methyl again. This is methyl carbinol. This is carbinol. Hydrogen के डिजाइन के 2 methyl ग्रुप लगे. This is dimethyl carbinol. And in this case it is
ट्राई मिथाइल, तीन मिथाइल ग्रुप लगे, ट्राई मिथाइल कार्बन. So methyl carbonyl, dimethyl carbonyl and trimethyl carbon. Next है types of alcohols. Types of alcohols आएगा monohydric alcohol. Monohydric alcohol केड़ा आएगा जिसे चिको हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है. इथाइल अल्कोहल इको OH ग्रुप लगा. डाइहाइड्रेट दो OH ग्रुप लगेंगे. इथिलीन ग्लाइकॉल. ट्राइहाइड्रेट तीन ग्रुप लगे होंगे. That is in common name it is called glycerol. ठीक है. So मोनोहाइड्रिक इको OH ग्रुप डाई दो और तीन ट्राइज के लिए होते हैं 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच. राइट. नेक्स्ट इज nomenclature of phenols. In nomenclature of phenols this is 2 methyl phenol in common name because this is orthopristol, not only orthopristol, this is orthopristol. Common name is called orthopristol. 1 2 3 methyl phenol. This is metapristol. This is metapristol. And then 1 2 3 4. This is 4 methyl phenol or this is parapristol. So this is ortho meta parapristols. Next is 1 2. It's 2 bromophenol or orthobromophenol we लिख सकते हैं common name. Again 1 2 3. It's 3 aminophenol. NH2 is amino. 3 aminophenol or meta-aminophenol. This is 1 2 3 4. 4 nitrophenol. This is or para-nitrophenol. Right? So this is the main nomenclature. Right? So next is next part is this group CHO-OH. तो अतः OH CHO तो CHO तो प्रिंसिपल होगा OH क्यों रहेगा सब्स्टिट्यूएंट. तो it's 2 OH का बन जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेहाइड. इतना रहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेहाइड. In common name it is called salicylic. Right? Then 1 2 again acid is principal. So 2 hydroxy benzoic acid. So in common name it is called salicylic acid. Again acetophenone, ketone is principal. 1 2 3 4 4 hydroxy acetophenone या para hydroxy acetophenone. Next type dihydric phenols. ये दो OH ग्रुप लगे. So this is benzene 1 2 diol or in common name it is called catechol. Then benzene 1 3 diol in common name it is called that is sarsenol. Then benzene 1 4 diol hydro common name is hydroquinol or it is termed as quinol, simply quinol here, right? So this is the basics or introduction to alcohols and phenols. So I stop my lecture here for the next lecture. Thank you.